Good morning, everyone. All right, so we'll start with today's topic, and today's topic is diabetes. So we are going to cover diabetes में the modern and the Ayurved perspective, obviously in a brief. Okay, what is diabetes? Diabetes happens when your body is not able to take up the sugar, that is glucose, inside the cells and use it for energy. This results in buildup of extra sugar in your bloodstream. So, when we were talking about carbohydrates, A2 topic, us din I explained you a little bit, but I would like to repeat it again. So when we are having food, okay, so food breaks down into the glucose. Carbs में break होता है और फिर वो glucose में break down होता है. And these glucose molecules are there in the bloodstream. ठीक है. Then we have a organ which is known as pancreas, जो leaf shaped organ होती है. Pancreas, in response to this glucose, releases insulin. ठीक है. Now we have these kinds of cells which are around 300 million, 3 million to 300 million cells होते हैं body में, which combines to make tissues and then organs. So हर एक सेल में इस ग्लूकोज को एंटर करना होता है so that the conversion into energy take place. अगर ग्लूकोज एंटर नहीं होगा, it will remain in the bloodstream, तो sugar levels high रहेंगी, and यही फिर sugar levels high वाला blood पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा and it leads to different kinds of diseases or disorders. So this glucose has to enter. So every cell has the gates attached to it, wherein the insulin molecule comes and attaches itself, and this door gets open and this glucose molecule enters the cell, and यहाँ पे फिर इसकी conversion होती है energy में. Okay, then it is a complex process. ठीक है. Now, what happens in type 1 diabetes? Now, there are two types of diabetes that we are going to talk, type 1 and type 2. Type 1 diabetes में pancreas is not producing any insulin. ये pancreas because pancreas damage है, pancreas में कोई infection है, pancreatitis है, inflammation है, whatever is the reason, it can be genetic, it can be lifestyle modified, कोई भी reasons हो सकते हैं, but pancreas insulin produce नहीं कर रहा. So in type 1 diabetes, insulin injections के through provide किया जाता है या medicines के through provide किया जाता है. Injections के through इसलिए because it straight away goes into the bloodstream. अगर medicines लोगे, it has to go through the entire digestive system. So injections are more preferred. So injections को through दिया जाता है and it is not reversible. Type 1 is not reversible condition, and type 1 को हम बोलते हैं insulin dependent diabetes mellitus, which means in this the patient is going to be dependent on insulin forever. हम इसे reverse नहीं कर सकते. This type of diabetes usually happens to children. They may be autoimmune condition or they may be genetic issue or by birth issue. Now, autoimmune condition क्या होता है? Autoimmune condition is when हमारी जो body है, हमारे cells जो है, वो कभी भी कोई foreign particle enter होता है body में, उसे attack करते हैं. Considering that the enemy has entered inside the body, a foreign particle has entered inside the body, and they start attacking that. So this is the function of our body. But जब हमारे cells की immunity थोड़ी weak हो जाती है या हमारे cells की function थोड़ी lose हो जाती है, वो अपनी ही body के healthy cells को foreign element समझने लग जाते हैं, and then they start attacking your own body cells. Condition autoimmune condition बोलता है, और ये किसी चीज की हो सकती है. It can lead to diabetes, it can lead to a kind of a hypothyroidism, it can lead to arthritis, it can target anything. Okay, so type 1 diabetes में insulin produce नहीं होता है. Type 2 diabetes में insulin produce होता है. Okay, type 2 में diabetes में insulin produce होता है, but probably insulin produce is less.
as compared to glucose. इसलिए glucose की quantum ज़्यादा रह जाता है blood sugar में. और the second reason is insulin is appropriate. Insulin कम नहीं है, but still and insulin is getting attached here also, but still the stores are, this door is locked. It is because of deficiency of certain nutrients like chromium, copper, zinc, selenium, vitamin C. कुछ vitamins की कमी की वजह से ये सेल अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि मुझे नॉक किया जा रहा है, मुझे अपना डोर ओपन करना है, बट द सेल इज नॉट एबल टू ओपन द डोर. ओके, सो टाइप 2 डायबिटीज के दो रीजंस होते हैं. आइदर इंसुलिन इज प्रोड्यूसिंग लेस और द सेल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट द somebody is knocking the door because of the deficiency of micronutrients. This type can be reversed. This is not insulin dependent. इस केस में आप मेडिसिन दे सकते हैं, बट साथ में अगर डाइट या लाइफस्टाइल पे वर्क करते हैं तो थिंग्स गेट इजीली रिवर्सिबल. ऑब्वियसली नॉट विद इन सम टाइम, 3 to 6 months अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते हो, थिंग्स डू गेट रिवर्स्ड आउट. ओके, yes, Shruti, you have any question? Good morning, ma'am. Actually, I did not attend last 2-3 classes. So I was asking, is this an independent class or is it linked to any other class? It is an independent class. We are taking up a new topic today and it is not linked. Yes, a little bit linkage will be there when we will be doing, the diet planning. So I would suggest, abhi weekend aa raha hai, you just cover up the recordings of that the I'll classes do. you have missed, and you able to catch up with the little part जो continuation में होगा, which is just the 10% of the topic of today. Okay. And ma'am, can you just brush up with type 1 diabetes once, because I joined 4 minutes late and I missed that thing. It will be there in the recording, Shruti. All right, thank you, ma'am. Okay. Kailash, you have any question? Yes, ma'am. Good morning. Ma'am, I want to ask that diabetes 1. Now, suppose if the mother is having diabetes 1 since childhood, will it affect the after reproduction? Will it affect or will be inherited into the new baby? Maybe. The chances remains, even if it is type 2 diabetes, next offspring में transfer होने के 50% chances होते हैं. अच्छा, ठीक है. Thank you, ma'am. Most welcome. All right, let's proceed further. So why is blood glucose level high and how does this happen? The process of digestion includes breaking down the food you eat into various different nutrient sources. Or, just a second. When you eat carbohydrates, your body breaks this down into sugar. When glucose is in your bloodstream, it needs a key to get into the final destination where it is used, which is inside the body cell. This key or help is known as insulin. We have just talked about this. Now, what is insulin? Insulin is a hormone which is made by pancreas, and this is an organ which is located behind the stomach. Pancreas release insulin in your bloodstream. Insulin acts as the key that unlocks the cell wall door, which allows glucose to enter your body cells. Glucose provides the fuel or energy to whose organs need to properly function. If you have diabetes, your pancreas is not making enough insulin, or your pancreas make insulin, but your body cells do not respond to it and can't use it as they should. If glucose can't get into your body cells, it stays in your bloodstream and your glucose level increases. This I have just explained you. Any question related to the mechanism, how this happens? All right. Yes, Deepika? Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, and how does the pancreas produce insulin? Is there any particular mechanism for that? No, also? it is not a particular mechanism. हर एक organ का अपना function होता है. So pancreas insulin produce करता है. Every organ produces certain hormones and enzymes.
So pancreas insulin produce करता है. There is one hormone glucagon that is also produced. Pancreas कुछ digestive enzymes भी produce करता है. So that is their normal function that is happening. And ma'am, the quantity depends on what, like you said, it may be producing more of insulin or less of the insulin. The quantum depends. एक normal individual में तो normal pancreas function करता है, and जितनी glucose होती है उसके response में उतना ही insulin produce किया जाता है. But जहाँ lifestyle issues में problem होती है for a very long period of time, और जहाँ dietary issues होते हैं as the micronutrient deficiency there, so इंसुलिन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, हर ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट आता है. सो पैनक्रियास पे भी आता है. एंड द सेकंड रीजन जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो सकती है कैन बी सम प्रॉब्लम हैपनिंग इन द पैनक्रियास. So pancreatitis is a condition which is more related to liver function, जो हम liver function में cover करेंगे in more details. Okay, ma'am. Thank you. Deepa, you have any question related to the mechanism which I have just explained? Yes, मुझे पूछना था कि जैसे डायबिटीज में कुछ लोगों को हो डायबिटीज नहीं, सॉरी, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है, तो बस वो 3-4 महीने के लिए होता है, तो उसका टाइप 2 में ही आता है डायबिटीज का पार्ट. Yes. और उसके रीजंस क्या होते हैं फिर, जैसे आपने Again, अभी bad बताया? lifestyle, overweight can be the main issues, or too much gain during pregnancy. तो वो अपने आप से ही वो डिलीवरी होने के बाद ठीक हो जाता है? अपने आप से ठीक जरूर होता है, लेकिन one has to be very careful because ठीक होके वो वापस भी स्टार्ट हो सकता है. We need to understand कि that person is now in the risk zone of diabetes. So वो इंडिविजुअल की शुगर लेवल्स तो ठीक हो जाती है, बट चांसेस ये है अगर वो अपना डाइट का या लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखेंगे, they will develop into a diabetic individual after few years. Okay. Thank you. Yes, Kailash Aswani, please ask your question. Yes, ma'am. Suppose किसी का पैनक्रियास सर्जरी से निकाल दिया जाए कुछ रीजन से, तो उसके आगे फिर लाइफ में क्या पैनक्रियास रिमूवल नहीं होता है. पैनक्रियास फेलियर होता है. सो उस केस में डेफिनेटली व्हेन द ऑर्गन फेल, जैसे हार्ट फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, वैसे ही पैनक्रियास एज अ ऑर्गन फेल होता है. उसमें आपका डाइजेशन भी इम्पैक्ट हो जाता है, आपकी सारी चीजें इम्पैक्ट होती है, बट ऑर्गन रिमूव नहीं. पैनक्रियास को जैसे हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, पैनक्रियास को रिमूव नहीं किया जा सकता. अच्छा, ओके. अशरफ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. मैडम, आप बोले ना कि डायबिटीज के 2 कारण होते हैं. एक तो बॉडी डायबिटीज इंसुलिन जनरेट नहीं कर रही है, दूसरा कारण यह है कि पैनक्रियाज का मुंह नहीं खुल रहा है, उसके अंदर इंसुलिन नहीं इंटर कर पा रहा है. तो ये दोनों टेस्टिंग कैसे हो सकता है कि उसको इंसुलिन नहीं बन रहा है या पैनक्रियाज में इंसुलिन जा नहीं पा रहा है? इसका क्या टेस्ट होता है? पैनक्रियाज में नहीं, सेल में इंसुलिन नहीं जा पा रहा है. ये कैसे होता है, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं जो हम अभी बात करेंगे आगे जाके टॉपिक पे. नीलिमा, एनी क्वेश्चन? आई एम जस्ट आस्किंग रिलेटेड टू जो मैंने समझाया है. जो नहीं समझाया उसके बारे में भी मत पूछिए प्लीज. Yes, ma'am. When somebody is having gestational diabetes, how we will count carbs and that is a later on topic. Nilima, we have not come to the diet. I'm just repetitively saying that जितना मैंने समझाया उसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो please ask the question. Okay, ma'am. So there are different types of diabetes, as we have just talked about type 1 diabetes जहाँ insulin नहीं produce हो रहा है बिल्कुल भी. Type 2 diabetes, either insulin is insufficient or the cell is not able to recognize that insulin है, पर भी doors glucose के लिए, see the doors are closed for glucose. So in that case, this is a deficiency of nutrients. Okay, then gestational diabetes, it usually, जैसे हमने अभी बात की, it goes away, but the person is at risk always. Pre-diabetic condition होती है जहाँ आपकी जो sugar values है वो diabetic level तक नहीं पहुंची हैं, but they are not normal also. They are hovering around in between. ड्रग और केमिकल इंड्यूस्ड डायबिटीज, जब किसी को बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या कुछ एड्स या HIV की मेडिसिन दी जाती हैं या कुछ अननेसेसरी लोग मेडिसिन लेते रहते हैं,
वो भी रीजन बन जाती हैं डायबिटीज की. Then what are the risk factors for pre-diabetes and type 2 diabetes? So risk factor for pre-diabetes and type 2 diabetes are, अगर किसी के हेरिडिटी है, किसी के पेरेंट को है या किसी के सिबलिंग को है, तो उनके आगे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. इफ एनी पर्सन हैज ओवरवेट और ओबेसिटी, या किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है, किसी की एज 45 से ऊपर है, पीसीओएस या स्ट्रोक या हार्ट डिजीज किसी को हुए हैं, या कोई स्मोकर है, इन सब इंडिविजुअल्स के चांसेस रहते हैं कि उन्हें डायबिटीज होने के रिस्क रहता है. सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इज थर्स्ट, टू मच ऑफ थर्स्ट, माउथ एकदम ड्राई रहता है, टू मच ऑफ फ्रीक्वेंट गोइंग इनटू यूरिनेशन, फीलिंग टायर्ड, द विजन गेट्स इम्पैक्टेड, नमनेस, टिंगलिंग इन द फीट, स्लो हीलिंग फॉर, कभी भी कोई चोट लगती है तो उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, वेट लॉस, एक्सेस हंगर, अनएक्सप्लेन्ड इन्फेक्शंस, अगर यूटीआई हुआ तो बार बार होता रहता है. ओके, एंड अगर किसी को डायबिटीज है एंड इफ द केयर इज नॉट टेकन, उन्हें आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, high cholesterol, atherosclerosis, and the major things that usually a diabetic individual suffer is from neuropathy, nephropathy, retinopathy. न्यूरोपैथीज नर्व एंडिंग्स डैमेज होने लग जाती हैं, नेफ्रोपैथी किडनीज डैमेज होने लग जाती हैं, एंड रेटिनोपैथीज आईज डैमेज होने लग जाती हैं. ओके, एंड इवेंचुअली फिर किडनी फेलियर हो जाता है. फुट, डायबिटिक इंडिविजुअल्स का फुट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, फुट डैमेज होता है, और अगर because they don't have the sensation there, they don't even realize कि उनको चोट लग गई है, and wound does not heal for months and months, and फिर वो ज्यादा infectious हो जाता है. So foot is the very sensitive organ, or the body part of the diabetic. So how do we diagnose? कौन से टेस्ट किए जाते हैं डायबिटीज के लिए? फर्स्ट इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट. ये टेस्ट किया जाता है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ डायबिटीज. रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट भी आप कभी भी दिन में कर सकते हैं, रैंडमली एट एनी टाइम. HbA1c is the most authenticated, most appropriate test for diabetes. HbA1c test यूजुअली आपको बताता है कि लास्ट 2-3 मंथ से आपका शुगर कंट्रोल कैसा है. ये टेस्ट मेजर करता है कि आपकी बॉडी में शुगर को ग्लूकोज से अटैच हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है. ओके, सो इसके लिए आपको फास्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी भी समय आप ये टेस्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट कि आपको एम्प्टी स्टमक ही करनी है. एंड दिस बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, जब डायबिटिक इंडिविजुअल्स टेस्ट करवाने जाते हैं तो दे कॉन्शियसली बिकम्स लाइक ओके वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट, तो 2 दिन वो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखते हैं, तो उनकी फास्टिंग लेवल्स ठीक आ जाती हैं. बट HbA1c आपको लास्ट 3 मंथ्स का कंट्रोल बताता है. So these are the normal pre-diabetic and diabetic values, and then the fourth test is done for oral glucose tolerance test, जो 4 levels में किया जाता है. empty stomach, then a glucose loaded drink is given, and उस drink के 1 hour, 2 hour और 3rd hour पे samples लिए जाते हैं, which tells कि digestion का random rate क्या है. ओके, ऑटो इम्यून कंडीशन के लिए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं. टाइप 1 डायबिटीज के लिए इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं. पैनक्रियास के टेस्ट किए जाते हैं इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द पैनक्रियास, व्हिच द डॉक्टर डिसाइड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज इट इज. ओके, सिम्टम्स मोर और लेस सभी डायबिटीज टाइप्स के सेम रहते हैं. सो हाउ डू वी प्लान द डाइट फॉर डायबिटीज? Yes, Naren, please ask your question.
All right, I believe let me take the question diet part first and then I'll take your questions. Let me finish with modern part, okay? All right, so diet में the first thing we need is obviously जब आप diet plan करोगे the first thing you need to find out is TDP. Then you need to find out whether उनको weight loss करना है, weight gain करना है या weight maintain करना है. उसके बाद proteins and fats ये चीजें हमें understand करनी है. Usually 45 to 55% हम carbs लेते हैं, 15 to 20% हम proteins लेते हैं, and the fats will be always less than 30% or equal to 30%. ये हमारी constitution रहती है. Like अगर आपने 45% carbs लिए हैं and you're taking 15%, so you will be in that case taking more proteins. ठीक है, अगर 45% ले रहे हैं 100% करने के लिए आपको कभी कभी 25% प्रोटीन तक भी लेने होंगे. So this carbohydrate composition depends upon about your HbA1c levels. अगर आपका HbA1c levels controlled है तो हम 55% तक भी ले सकते हैं, but HbA1c levels above 10 है, 9 है, then we restrict the carbs to 45%. Okay. Then the other thing is we come to macronutrients. Carbs जो हम लेते हैं, carbs will be taking in the complex form always. We have talked about simple and complex forms. Carbohydrates हमेशा हम complex forms में लेते हैं, and we take always low glycemic index foods. So what is low glycemic index foods? When जब हम कोई खाना, when we eat some food, okay, the food gets digested and the glucose is released in the bloodstream. When the food gets digested and it is released into the bloodstream, हर food की एक speed होती है. कुछ foods बहुत rapidly glucose को release करते हैं bloodstream में, कुछ foods धीरे धीरे blood sugar को release करते हैं bloodstream में. Just give me a moment, please. Okay, so when we are planning for the diet, हम complex carbohydrates देते हैं, low glycemic index foods देते हैं. So glycemic index basically it tells कि how rapidly glucose is released into the bloodstream. ठीक है, अगर मैं I am taking an example of an apple versus I am taking an example of a banana. So banana will be, banana will be having immediately सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें फाइबर कंटेंट होता है बट इतना ज्यादा नहीं, तो बनाना शुगर लेवल्स को ज्यादा जल्दी इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू एप्पल. सो बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी हाई एज कंपेयर टू एप्पल. ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मील, ओके, आई एम टेकिंग कर्ड राइस. ओके, कर्ड राइस में ले रही हूँ जहां कर्ड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट रहता है, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है. बट नाउ इफ आई एम टेकिंग खिचड़ी विद वेजीज, इसमें आई एम हैविंग माय दाल, वेजीज एंड आई एम हैविंग राइस. ठीक है, दाल और वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिस भी फूड में फाइबर और प्रोटीन्स होंगे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा. ओके, जिसमें फूड में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा. सो दाल और वेजिटेबल जहां मैंने राइस के साथ कंबाइन किया, सो इस मील का एवरेज विल बी अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मील. ओके, नाउ इफ आई एम टेकिंग अ प्लेन पराठा, so plain paratha will have a low glycemic index versus if I am taking a stuffed paratha. So obviously I don't know what will be the glycemic index. As a layman, I am understanding because मैंने पराठा में आटा में
वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, दिस विल मेक, सो प्लेन पराठा विल बी सॉरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स as compared to the vegetable paratha which will be low glycemic index. ठीक है. Now if I am telling you I am having banana, this will, banana will have high glycemic index versus I am having banana with seeds or I am having banana with nuts. This will reduce the glycemic index as compared to only banana. Okay. Understood the concept of glycemic index? We in the diet are not going to calculate the values of glycemic index. We in the diet need to know that whether the food is low glycemic index, हम उसे कैसे अगर एक food high glycemic index है, हम उसे कैसे low glycemic index बना सकते हैं. Let's go through the theory. So let's begin with this and then we further understand. Planning what you eat and following a healthy meal plan. Follow a diet which is rich in vegetable, whole grains, beans, fruits, healthy fats and low sugar, or DASH diet. DASH diet basically बोला जाता है dietary approach to stop hypertension. ठीक है, मैं ये glycemic index में थोड़ा सा divert हो गई थी. So complex carbohydrate, low glycemic index foods, proteins should be good quality proteins, fats हमारे basically good fats होने चाहिए. So what are good fats? Good fats are which are coming from MUFA sources, PUFA sources, which are coming from nuts and seeds, from eggs. These are all good fats. What are bad fats then? Fats which are coming from refined oils, fats which are coming from processed oil, junk food, वो bad fats होते हैं. Then fiber plays a very important role. Around 40 grams of fiber should be there in the diet of specifically diabetes. It is very very important because fiber जो है वो sugar molecules को bind करता है और release slow करता है. That is why I said glycemic index जब है, so fiber अगर food में होगा वो automatically glycemic index को low कर देगा. So then we need to follow a diet. We will be discussing in that. Exercising is important. So only diet is not going to manage your diabetes. You need to work for your physical activity also, and sedentary activity nahi hona hai. You need to be active for your entire day, and minimum 30 minutes activity तो होनी ही चाहिए. अगर कोई overweight है, then one should focus on losing weight. Medication should be taken if at all doctor has prescribed, and manage your day-to-day schedule. So these are the macronutrient distribution that we do. We hardly go anytime 60% for diabetic individual. And this is the fiber, that is 40 grams on average we require. And pulses, whole grains, fruits and vegetables are good sources of fibers. Nuts and seeds are good sources of fibers. So protein requirement 0.8 to 1 gram रहती है normally. Obviously अगर diabetic individual is doing exercise तो उसके हिसाब से vary करेगा. Glycemic index I have explained you, but I'll just take you through the theory part also. Glycemic index, simply put, is a measure of how quickly a food causes our blood sugar levels to rise. Okay, I'm just underlining the points that are important, which we have already spoken about. Blood sugar levels rise होते हैं.
Okay, glycemic index is a nutritional ranking system that measures how much certain food affects the blood sugar levels. Fats, foods that are low on glycemic index like oatmeal, bran cereal, raises blood sugar level less than foods that are high in glycemic index, such as white bread, sugary cereals. They are measured on a scale of 0 to 100. Foods with high glycemic index are quickly digested, quickly absorbed, and causes a rapid rise in the blood sugar levels. Foods with low glycemic index are digested, absorbed at a slower rate, and causes a slower rise in the blood sugar level. They are basically rich in the fiber, protein content. Example, glycemic index of apple is 38, yogurt is 11, and peanut is 7. So the best food is peanut here in comparison. Okay, nevertheless apple भी low glycemic index food में ही categorize होता है. Any food जिसका glycemic index 55 से कम है, it is considered as low. 56 to 69 is medium, and above 70 is a high glycemic index food. There are certain factors that affect the glycemic index. First is physical form. जितना ज्यादा एक फूड को हम प्रोसेस करेंगे, उतना ज्यादा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा. जितना ज्यादा हम एक फूड को, जैसे इंस्टेंट मील्स लेते हैं, रेडी टू ईट मील्स लेते हैं, वेदर इट इज एन ओट मील, तो इंस्टेंट as compared to a regular oatmeal that you will plan, definitely instant oatmeal का glycemic index ज्यादा होगा because it is processed. Food combination, जब carbohydrate foods को हम we eat them, the glycemic index changes. जैसे मैंने combinations बनाए कि हमने राइस की जगह हमने खिचड़ी अगर ले लिया, हमने combination बना लिया food का with a food which is high in protein, fiber or fat, it reduces the glycemic index. कुकिंग टाइम, जितना ज्यादा हमारा कुकिंग टाइम होगा, उतना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा एक फूड का. ठीक है, सो जितना हम कम टाइम लेंगे कुकिंग में, उतना ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा फूड का, विच इज बेटर. एसिडिटी, द मोर एसिडिक द फूड इज, द लो इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स. लाइक विनेगर, उनकी एसिडिटी ज्यादा होती है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है. Fibers, the more are the fibers, the less will be the glycemic index. The number of other factors influence how quickly carbohydrate in food rises. Ripeness, जितना एक ripen होगा, उतना उसका glycemic index ज्यादा होगा. Type of starch influence करता है कितना fast carbohydrates body में digest हो रहे हैं. So if the food is starchy, the carbohydrates are going to be digested very fast. Physical form, जितना अगेन फाइनली ग्राउंड हम चीज करेंगे, उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल बी हाई. फॉर एग्जांपल, अगर आप ओट्स को ग्राइंड कर रहे हो एंड यू आर ग्राइंडिंग ओट्स इन अ वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा एज कंपेयर टू ओट्स जिसे आपने कोर्सली ग्राइंड किया होगा. So when we are planning the diet, we need to have more fruits and vegetables because that gives us more fiber. We need to have more fiber in the diet. We need to have good combinations of high glycemic index and low glycemic index foods so that a balance is achieved. And processed foods nahi lene because they impact the utilization also and they impact the glycemic index also. अगर आप low glycemic index foods लेते हो, तो आपका डायबिटीज पे, ओबेसिटी पे, कार्डियक हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, आपकी हेल्थ बेटर होने लगती है. Difference between glycemic index and glycemic load. Now this is the second concept. We do not use this concept very widely, but I'll just explain you that. तो ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जब हम बात करते हैं, ग्लाइसेमिक लोड टेक्स इनटू अकाउंट कि कार्ब कंटेंट कितना है एक फूड का, एंड देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट फूड, एंड देन इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय 100. इस तरीके से हम ग्लाइसेमिक लोड फाइंड करते हैं. ग्लाइसेमिक लोड हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कितना रैपिडली शुगर ग्लूकोज जाने वाला है ब्लड स्ट्रीम में, उसके बारे में भी बताता है.
और ग्लाइसेमिक लोड कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी फूड का देखता है, बिकॉज डायबिटिक डाइट में द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज ऑन द कार्ब कंटेंट. Okay. So I'll just take you through the theory and share few examples with you. So while most people are now familiar with glycemic index, the benefits of eating more low GI foods, the difference between GI and GL is something they'll get confused about. So GI is essentially a way of ranking carbohydrate food according to the speed at which they cause the blood sugar level to increase or fall. High GI foods are those which are more quickly digested, they are absorbed, while low GI foods break down slowly or gradually glucose को bloodstream में release करते हैं धीरे धीरे से. Overall effect that a food has on blood glucose is dependent on glycemic index also and carbohydrate also. So glycemic load takes into account both these factors, the glycemic index of food multiplied by the amount of carbohydrate that food has divided by 100. So example, glycemic index एप्पल का 38 है. एप्पल में 15 grams carbohydrates है. So 38 multiplied by 15 divided by 100, it gives a glycemic load of 5.7. Okay. So when we are talking about glycemic load, 0 to 10 are low glycemic index, 11 to 19 is medium, and 20 से ऊपर is high. So here another example is given. Okay, roast chicken for dinner and white rice or couscous examples are given. Glycemic index bread का दिया है 45 and carbohydrate content is 18 grams. So 45 multiplied by 18 divided by 100, it gives a 8.1 glycemic load, which is again a low one. Okay, but again I tell that we always calculate understand glycemic index of the food. बहुत critical cases में hospitals में glycemic loads calculate किए जाते हैं. So this is the common glycemic index of common Indian foods. Just for your information, this is a sample diet plan for diabetes. If you just see each and every meal here, you will see vegetable, fiber-rich food, protein-rich food, fat-rich food combined in each every meal, so that if we are making it low glycemic index and fiber is also meat. Just go through the plan for a minute and put your questions in the chat section if you have any doubts. Okay, now what are the foods that needs to be avoided when we are planning the diet for diabetes? All the refined foods like maida, biscuits, cakes, pastries, all the processed foods needs to be avoided. Refined oils, butter, saturated fats avoid करने चाहिए. High glycemic index foods like banana, mango, खजूर, ये सब avoid करने चाहिए. अगर आपका random sugar level 200 से ज़्यादा है, fruit juices avoid करने चाहिए. However, what I say is अगर blood sugar levels controlled हैं, तो हम ये foods, nuts and seeds के साथ once in a while ले सकते हैं. Cold drinks, fruit juices, sugar, jaggery, honey, candies should be avoided. Going into the Ayurvedic perspective, Ayurved में glycemic index को या diabetes को मधुमेह बोला जाता है, ठीक है, या प्रामेह बोला जाता है, जिसमें urination frequent होती है. And causes according to Ayurveda are, अगर ज्यादा कफर related foods आप अपनी डाइट में लेते हैं या एक ही फूड का इंटेक बार बार करते हैं, if you have a sedentary lifestyle, physical activities या exercises आपकी रूटीन में नहीं है, you are sleeping excessively, genetically you are at the risk, stress, fear or long standing illness. So potent standard herbs that we can use, you know, कुछ herbs जैसे कि garlic, अगर आप अपनी डाइट में हर रोज raw 2 garlics या cooked form में लेते हैं, this is very beneficial. Bilwa leaves, shilajit, bitter gourd juice, then cinnamon concoctions, fenugreek seed का आप या fenugreek leaves include कर सकते हैं, आंवला. These are the foods जो बहुत easily available हैं, ठीक है. अश्वगंधा,
Then you have these flax seeds, mustard, barley, turmeric, jamun in the season. These are good foods that are available during the seasons. And अगर ये पूरी list में से आप दिन में 3 to 4 foods भी include कर लेते हो, they along with other tips for management, it is very, very good for your management of diabetes. Certain yoga asanas that are done for diabetes, because जब हम breathe in breathe out करते हैं और एक specific आसन करते हैं, उनका impact रहता है हमारी hormone production पे. So and stress is one of the major reason for hormone imbalance in the body. So yoga आपके stress levels को calm down करता है. ताड़ासन, पवन मुक्तासन, गोमुखासन, सलभासन, धनुरासन, मयूरासन, उष्ट्रासन, सूर्य नमस्कार, pranayams like Bhastrika, Brahmari and Surya Bhedi are very, very important for diabetes management. Certain Ayurvedic formulations जैसे कि त्रिफला, शिलाजित, वड़ी, वती, गुगुलूस, ये ओबेसिटी में भी काम आते हैं, ये बहुत सारी डिजीजेस में काम आते हैं. They are very beneficial. That's all for today's topic. I would like to answer your questions now. Please put your questions or raise your hands. Yeah. Wheat आटा is moderate in glycemic index. हम उसे और ज्यादा लो करते हैं तो हम डायबिटिक इंडिविजुअल्स को मल्टीग्रेन रोटीज बना लेने को कहते हैं, या हम उनकी रोटी में फ्लैक्स सीड्स या मेथी सीड्स का पाउडर ऐड करते हैं टू मेक इट फर्दर लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं डायबिटिक इंडिविजुअल्स. यस दीपा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. अभी जो मार्केट में बहुत टाइप के स्वीटनर्स मिलते हैं, आपने ऑलरेडी बोला कि स्टीविया यूज करना चाहिए, स्टीविया इज गुड. तो डायबिटीज जिनको हुआ है तो ये स्वीटनर्स, और अगर उसके कंपैरिजन में अगर जैगरी ले ले तो व्हाट इज बेटर? अगर यूज ही करना है कोई स्वीट्स में तो व्हाट इज बेटर? ऑब्वियसली देन अगर यूज करना है तो अगर स्टीविया की ऑप्शन है दैट इज द सेफेस्ट. बट अगर स्टीविया की ऑप्शन नहीं है देन इट इज बेटर टू यूज जैगरी. But it is not advisable to use jaggery by the diabetic individual. Not even dates or dry dates? No, because carbohydrates होते हैं ना, and diabetes में the main thing is we have to control the carbs and meet the nutrient requirements. अगर हम carbs को control करते हैं and we give these foods, तो हमारी जो micronutrients है वो बिल्कुल नहीं होते. Yes, that reminds me of one thing. Deepa, I'll just put your question on hold and I will want to share one thing to all, because I have told you that certain micronutrient deficiencies होती है जिसकी वजह से the cell is not able to understand the knock. So those vitamin deficiencies I want to share with you. Just give me a moment, sharing in the whiteboard. Please take a note of these points. This will help you to plan the diet also. So the vitamins that we are talking about, D, magnesium, potassium, calcium, sodium, chromium, copper, zinc. These are the deficiencies जिनकी वजह से the cell is not able to understand the knock. So अगर आपके इंसुलिन प्रॉपर है, अगर आप डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करते हो, रिवर्सिंग द कंडीशन becomes very. Just take a note of this and then I'll go to your questions. Yes. Tamarunisha Vasudeva. Good morning, ma'am. Good morning. My question about yesterday topic, you said the carbohydrate is very much important for the body's energy, brain function, etc. Yes. But nowadays, the paleo diet, keto diet, or people are following. Could you please explain about those kind of diet? What will happen to us? That is altogether a different topic, but I would like to tell you that these are fad diets. These are not nutritious or balanced diets.
these are not focusing on 100%, attaining all the nutrients from the diet. So one should not follow such fad diets. One should always follow a nutritious, balanced diet only. Diets would have the repercussions or the side effects after, immediately results are seen, but later on side effects are also. Okay, okay, ma'am. Okay. Okay. Yes, Shilpi, please ask your question. हाय गुड मॉर्निंग। Good morning. मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे आपने बताया खिचड़ी इज अ वेरी गुड फूड, Yeah. राइट? तो खिचड़ी के अंदर अगर हम दाल और चावल सेपरेटली कुक करें तो वो भी क्या सुपर फूड होता है? अगर नहीं तो क्यों? नहीं, that is also considered as a good combination. आप दाल को अलग कुक कर सकते हो, चावल को अलग कुक कर सकते हो, but when you are giving for diabetes, the quantity of rice should be half than the quantity of dal, because दाल्स में प्रोटीन ज्यादा है, दाल्स में as compared to rice फाइबर भी ज्यादा है, तो हमें उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो करना है. सो आइदर यू हैव खिचड़ी में भी अगर आप लेते हैं तो अगर आप whatever quantum of rice you are taking, you will be taking double the quantum of dal or vegetables in that. Similarly, आप separately cook करते हैं तब भी आप quantums इसी तरीके से लेंगे, so that the ultimate glycemic index is low for the food. ओके, देन हम लोग आजकल बहुत ज्यादा बोलते हैं कि यू कैन रिप्लेस व्हीट विथ मिलेट्स, आटा, मिलेट्स फ्लावर एंड राइस विथ आल्सो लाइक होल मिलेट्स. सो इन दोनों में बेसिकली आपने जैसे पहले बताया था जो मिलेट्स में और जो व्हीट है उसमें मेन है कि लाइक उसमें कुछ ग्लूटेन है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, राइट? व्हीट में, यस. व्हीट में. सो अगर हम इसको पूरा टोटली अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो हाउ डज इट इफेक्ट ऑन आवर बॉडी? It is going to affect in a good way. First of all, अगर gluten से problem है तो digestion issues नहीं होंगे. Plus other millets are rich in fiber, rich in B vitamins, and they उनका जो absorption है, glycemic index है, वो भी low है. और अगर ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है तो then one can continue taking wheat, that is not a problem. But अगर if a person is normal, they can have a normal wheat chapati, but अगर कोई condition है तो it is always preferred that multigrain chapati या different grain chapati should be there along with wheat. ओके, सो हम लोग मिलेट्स को मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे ज्वार ले लिया, या वी शुड नॉट मिक्स बिकॉज एवरी हम ज्वार, रागी, बाजरा, जब आप मल्टीग्रेन आटा लेते हो मार्केट में, यूजुअली इट्स अ मिक्स ऑफ 5 grains. So it is up to you whether you want to mix 2 grains or 5 grains, or you want to have a single grain but keep the grain in every single meal. It's absolutely okay whichever way the person wants to take. नो, बट जैसे ज्वार का आटा जो होता है दैट इज कूल इन नेचर, बाजरे का आटा इज हॉट इन नेचर, रागी इज अगेन हॉट इन नेचर. तो अगर हम कूल और मतलब हॉट को मिक्स करेंगे तो इफेक्ट विल बी सेम और समथिंग? इट विल बी, सी एज पर द मॉडर्न न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट कंटेंट पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है. यू कैन मिक्स देम. We can make them. Secondly, अभी आपने कहा कि जो एसिडिक वो होते हैं that is good for diabetes, right? They have low glycemic index. Yeah. So जैसे watermelon है, इसका जो nature है that is acidic, Yes. right? But in glycemic index it is high. So how we? So we can give watermelon, that is okay, because see watermelon में carbohydrate content ज्यादा है, ठीक है? And if you look into the pH of watermelon, I don't think it is too acidic. Just give me a moment. Yeah. Watermelon pH is between 5, it is around 5.6, 5.5 to 5.6. So it is not very acidic, first of all, and secondly उसमें 90% water content होता है, Okay. which dilutes the properties of acidification, but carbohydrate content ज़्यादा होता है. So we cannot say कि because carbohydrate content is more, हम diabetic individual को watermelon नहीं दे सकते, because अगर हम carbohydrate consider कर रहे हैं 90% उसमें water भी है.
So Okay. we can give at least 2 to 3 slices in one portion according to the weight of the individual watermelon दे सकते हैं, but it is always suggested कि अगर एक low glycemic index food है, आप उसके साथ protein and fiber rich foods को combine करो. So whenever I prescribe watermelon, then I prescribe to sprinkle chia seeds on it, to sprinkle a little bit of cinnamon powder on it. This helps in reducing the glycemic index of that food. Okay, thank you. And what about pomegranate? क्या मतलब जो अगर किसी को डायबिटीज है तो किया क्या जा सकता है पोमोग्रेनेट with Right. black pepper. Again, black pepper pomegranate की absorption को भी increase करता है, iron absorption को भी increase करता है, and black pepper के साथ उसकी utilization अच्छी होती है. So we can have pomegranate juice with a pinch of black pepper, right? Why to take juice? Diabetes में juices should not be given. One should eat a whole fruit. And if we are taking in a very small amount because of the time issue and all. Again, I would suggest अगर किसी को अपनी condition को देखना है, one has to manage and come out of the comfort zone. Juice will not be a good option for diabetic individuals. Vegetable juices are also not good. Vegetable juice is okay. No, we are talking here about fruit juice. Okay. And what about coconut water? It will Coconut increase water your... can be taken. ओके मैम, एक चीज और पूछनी थी, आप है ना ये जितने भी आपने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अभी दिए हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और भी आप ज्यादा देंगे या बस दैट इज द ओनली? दिस इज व्हाट वी आर गिविंग. और भी ज्यादा हम प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड वी हैव टाइम. ओके, सो अगेन वी कैन गिव यू द रेफरेंसेस बुक्स. आपके पास आपको रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, उनमें भी आपको ये सब मिलेगा. Okay, and जैसे Shilpi, we need to answer everybody else also. So if you don't mind, I would want to shift it to next person. Thank you. Padmavati, please ask your question. Yes, good morning, ma'am. Good morning. आपने ये बताया ना बिल्व लेने के लिए, इसको कैसे लेना है? बिल्व को, बिल्व पत्र की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, आप इसको जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं और आप इसको अपने खाने में भी ले सकते हैं. जूस फॉर्म में बेल का जूस इज बेनिफिशियल. Okay, no, bay leaves or you are talking about fruit? Both. Bail in any form is good. Okay, leaves how we can take, like we can chew or one or two, You or can how chew. that also chew की जा सकती हैं, या okay. आप उन्हें अपनी, okay, and you that know, yes, go ahead. हाँ, Padmavati, you were saying something. Yes. फ्लेक्स सीड आपने बताया, उनको अलसी के बीज की बात कर रहे हैं ना आप? बिल्कुल. Alsi, okay. How to take these flax seeds? You can take it as it is, raw, or you can mix, sprinkle it in your fruits or salads, or you can make a powder of it and mix it in water and have it. Okay. And one more thing, what about honey? Is that good for sugar or no? No, it is not. No. No. Okay, thank you. Thank you so Ruchi, much. please ask your question. Most welcome. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. मैम, जो स्टीविया की लीव्स होती हैं, उसे भी हम यूज कर सकते हैं या हमें टैबलेट्स फॉर्म? उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? You can, you know, if you're using it in the chai preparation or anything, you can just boil them in the tea. The sweetness, because they have natural sweetness, तो वो sweetness आ जाएगी. But अगर आप किसी डेजर्ट preparation में यूज करना चाहते हो, फिर आपको टैबलेट फॉर्म ही यूज करनी होगी. ओके. बट अगर आप किसी लिक्विड चीज में यूज कर रहे हो तो बॉइलिंग से उसका एसेंस आ जाएगा. बॉईल करके हम ले सकते हैं. Yes. एंड मैम, व्हाट ऑल फ्रूट्स आपने दिया है मुझे एक टेबल, लेकिन स्टिल आप जैसे बता सकते हैं कि क्या क्या फ्रूट्स हम दे सकते हैं डायबिटिक पर्सन्स को? See, when we talk about the practical approach, I tell them to have all the seasonal foods, all the seasonal foods. But when it comes to mango, then I tell them, yes, you can have it, but 1/4 of it, and with the seeds and nuts. Okay. Okay. The portion again depends upon कि हम 1200 calorie diet बना रहे हैं या 2000 calorie diet बना रहे हैं. But I'm just talking an average right now with you. Likewise for banana, हम banana ले सकते हैं, but banana के साथ there should be at least 5 almonds, 2 walnuts, तो वो थोड़ा सा complex हो जाएगा. मैम, जैसे अगर हम समर्स में लेते हैं तो हम आलमंड्स ले सकते हैं बनाना के साथ?
Absolutely, soaked almonds. soaked almonds. मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने बनाना अब लिया और हमने almonds दिन में कभी भी ले लिए, या it is a combination of two at that time? Because नहीं, it should be in combination, because जब आपका बनाना digest होगा तो sugars will be released rapidly in your bloodstream. So उसे थोड़ा सा control करने के लिए उसी में हमें कुछ चाहिए जो sugar release को slow down कर सके. Okay. And what all fruits like other than this? Sorry? Ma'am, other fruits they can like practically they can take according to Indian As I this thing. told you, any fruit like apple, pear, banana, then you have oranges. Seasons में जो भी food है वो सब लिए जा सकते हैं, but in the quantum. कि हर एक फूड में Okay. जैसे वाटरमेलन है, इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कम होगी. बट हम एप्पल ले रहे हैं या हम पेयर ले रहे हैं तो हम वो बड़ा एक एप्पल या पेयर ले सकते हैं, बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है. Okay. Ma'am, one more thing. Like modern and Ayurved totally different चीजें बताते हैं. ज्यादातर कॉम्बिनेशन में आई हैव Yes. सीन कि बहुत डिफरेंट मतलब Opposite बिल्कुल है. कॉन्ट्राइंडिकेटरी है. तो मैम वो कैसे हम समझें, वो कैसे हमें पता So चलेगा? जैसे again, हाँ जी. yeah. So what happens is you will understand this जब आपको एक ये कोर्स पूरा कवर कर लोगे ना, आपको by the end you will understand कि एक इंडिविजुअल को पिकअप करके, फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, ठीक है, नाउ दैट इंडिविजुअल हैज म्यूकस इश्यूज, फ्लेम बनती है बहुत ज्यादा, तो मैं आयुर्वेद प्रिंसिपल को फॉलो करूंगी उस केस में, और मैं फ्लेम वाली चीजें, मैं बनाना शेक उनको नहीं दूंगी. बट इफ अ पर्सन इज एब्सोल्युटली ओके, देयर इज नो इशू ऑफ कफ, देयर इज नो इशू ऑफ कंजेशन, आई कैन गिव बनाना शेक टू दैट पर्सन. So this is how we decide. इसलिए जो हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन होती है क्लाइंट के साथ, वो एक डिटेल्ड इंटरेक्शन होनी चाहिए जिसमें हमें उनकी सारे चीजों का पता चल जाए. उस हिसाब से एक ही डाइट में हर अगर हम 6 मील्स बना रहे हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि 4 मील्स हम मॉडर्न के हिसाब से बना रहे हैं, 2 मील्स हम आयुर्वेद के हिसाब से बना रहे हैं. We can do that. We should be combining both these concepts together. एंड मैम जैसे फ्रूट स्मूदीज पर्टिकुलरली मुझे ये बहुत स्ट्राइक करती है बार बार चीज, बिकॉज आप जो मॉडर्न न्यूट्रिशन में एडवाइस कर रहे हैं वो फ्रूट स्मूदीज एडवाइस कर रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट स्मूदी ले लो विद नट्स एंड सीड्स, एंड आयुर्वेदा सेज कि मिल्क के साथ आप फ्रूट्स डालेंगे ही नहीं. Exactly. So again, both the sciences are right, Ruchi, and we need to see कि, और बेसिकली मिल्क का सिर्फ म्यूकस रिलेटेड इशू होता है. इंडिविजुअल के देख के हम वो चीज डिसाइड करते हैं. ओके ओके, थैंक यू मैम. मोस्ट वेलकम. रोहिणी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, what about consuming ghee and milk in diabetes? That can be taken according to the allowances of the diet. Okay. And the second question is like how like there are so many varieties of honey is coming in the market. So for normal individual, not for diabetic person, which is recommended? Like the only honey that is recommended is raw organic honey. अब वो कोई भी ब्रांड के अंदर आता है, but it should be raw organic honey. Because nowadays the manuka honey is also coming. Manuka honey भी अच्छा है. Yes, that can be taken. Yes. Okay. So many brands and so many types are coming, so it confuses individual what to take, what not to take. Yes. Okay. Thank you. All right, Shruti, yes, please ask your question. Ma'am, actually I was asking like is it allowed to take sugar free for a diabetic person in certain things? No, it should not be. But once in 3 months, once in 6 months, something is taken, okay, but not on a regular basis. Sugar free is not good for health. No, it has a lot of side effects. Okay. Thank you. Most welcome. Mahima, please ask your question. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I want to ask कि ये जो डायबिटीज पर्सन है, ये जब सुबह उठ के नट्स खाते हैं तो कैन दे दैट अंजीर मुनक्का जो भीगी हुई अंजीर होती है, अंजीर मुनक्का किशमिश, all that what we soak in the night time? See, they can take, but not all of them together, because अंजीर भी, मुनक्का भी, किशमिश भी, तीनों कार्बोहाइड्रेट रिच है. So अगर आप आमंड्स ले रहे हो, वॉलनट ले रहे हो, तो either you take one of them, either you take अंजीर, or you take munakka, or you take raisins. Even khajur is okay for them? Khajur be one maximum, 1 or 2.
depending upon their sugar levels, because Like, it is very high in carbohydrates. they eat this thing like जो अपना रात का पराठा बच जाता है उसको उसमें रोल करके खाते हैं, तो is it okay? No, it is a very high carbohydrate meal and that is not allowed. So बासी पराठा is not allowed for the meal. नहीं, बासी पराठा में जो आपने रोल करके बोला ना, हाँ, या तो उसमें अगर वो कुछ शुगर और ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डालते हैं तो वो नहीं होना चाहिए. Okay, thank you. Freshly cooked food is the best for them. Nilima, please ask your question and then we wind up our class for today. Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask, like, when people are doing intermediate fasting, how it works, ma'am? Carbohydrates, how it will be spent, and is it good or it is not good? First question. Second question about gestational diabetes diet plan, how we can give, So because they need. Yeah, I got that, Nilima. Okay. Yeah, so I'll just let me answer the first question, then I'll come to your second question. Intermittent fasting is a way of lifestyle, and intermittent fasting is very good in reversing the conditions like diabetes and other conditions also, but they have to be planned under the help of a supervision or a practitioner. Intermittent fasting, अगर आप डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो 8 आवर्स या 10 आवर्स जो भी उनका फीडिंग जोन है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. Okay. Did you get that? Yeah. So अगर आपके normal individual, ma'am, sorry, it normal is for individual में भी same ही होगा. You have to disperse your macros equally in all the meals. Okay. Okay, and gestational diabetes mein you were asking the way we plan the diet. Yes. So gestational diabetes, Hanji, please say. They will be needing more carbs, high in carb food, then the nutrition values should be high. So usually उनकी gestational diabetes की values के हिसाब से doctors they prescribe what is the values that are suggested for them. So हमारा काम सिर्फ रहता है कि prescription पे हम diet plan करें. Now if for example the doctor has not prescribed, then we see the HbA1c values and उसके हिसाब से we go 55% of carbohydrates, 20% of proteins and 30% of fats for their increased calorie requirement. Okay, ma'am. Thank you very much. All right, so we wind up our class for today here, and I will see you all tomorrow with answering all your questions. Thank you so much. We can now leave the meeting for today.